good evening to everyone tuning in to today's live stream. So welcome to today's live stream. How is everyone doing? I know it's been a long, at least a couple of weeks since we have done our live stream, but welcome. How are you guys doing today? How's it going? Hello, Azim. How are you doing? Kya hal chal? Average. What server are you going to play? I haven't decided that yet. Canadian FGIG. Hello, Canadian FGIG. How are you doing? Welcome to the live stream. Hello, Oliver. Okay, so let's go ahead and first decide what server we will be joining today. Hello, Pat. How are you doing? How's India? It's noisy. Let's just say it's noisy. Hello, hi Sad, how are you doing? Yes, today is your sister's birthday, so happy birthday to Zoya, to your sister, and may she have a great day today. Where's the vlog? No vlog, Pat, no vlog. I really don't have time for vlogging. I'm barely able to find time for anything right now, so yeah, unfortunately no time for vlogging. Let's join event server 3. Let's join event server 3. Hello, hi best gamer, how are you doing? Welcome to the live stream. Event server 3. Yep, let's join event server 3 and this should be good. Join as pilot. I took gate R8 at NZQN. Yes, Oliver, I have made a note of that. Today is our Eid to me. Eid Mubarak, best gamer. Alright, let's go and confirm, reset, and oh wow, there is, okay, so I think there is another event going on from NZ. Okay, so let's start from Auckland. I will be choosing gate number 76, and let's go to Queenstown. I will be choosing it was R08 for you, right, Oliver? So let's go with R5. I will choose R5 on this one, and also make sure that you change your arrival runway to 05 after you start. Alright, let's go ahead and let's start the game. So Pat, how are you doing, Pat? How are you doing? It's been a long time, right, since we have done a live stream. हाय, एक सेकंड रुक जाओ भाई. ऑलराइट, अभी ये सब बंद करेंगे, एयरक्राफ्ट हुड को ऑन करेंगे. हाय ट्रम्प जी, कैसे हो? अरे कहाँ यार RFS गेमर, कहाँ ट्रम्प? मैं अभी इंडिया में बैठा हूँ. अभी मैं कनाडा जाऊँगा तो अपना क्या बोलते हैं, अभी कनाडा के बारे में बात करेंगे, ट्रम्प के बारे में नहीं भाई. ऑल राइट, आई एम एक्साइटेड. यस, लेट्स गो अहेड एंड गेट स्टार्टेड. The gift for it, it's 6 months pro RFS, so I say start to I hope I can gift that, but unfortunately I can't. Anyways, I will do some giveaway in the future, so certainly we will look at some RFS Pro giveaway in the future, not at the moment. कहाँ इंडिया में हो या जाली अमेरिका? नहीं भाई, अभी इंडिया में ही हूँ. इंडिया में मैं अभी मुंबई में हूँ. कनाडा रियल में या गेम में? भाई रियल में कनाडा जा रहा हूँ. कनाडा का PR मिल गया है मेरे को, अब जाएंगे हम कनाडा. So seems to be 2 hours. Yeah, roughly 2 hours and 27 minutes. Yep. Alright, let's go ahead and connect the ground power unit and the air conditioning unit. No, it's from my parents, the gift. अरे क्या बात है, आ जाओ फिर. अगर आपको गिफ्ट मिल गया तो भाई आ जाओ, ज्वाइन करो. पैट, आपने इस किसी के तो ऊपर स्पॉन किया. हाँ, ट्रांससेट के ऊपर आपने स्पॉन कर दिया है पैट. When you leaving for Canada? I will be leaving sometime, let's say by end of April. I shall be a bit faster since I am in a jet. I can go slower. No, that's fine.
Continue with your flight, Canadian Aviation, because we only have 8 gates at Queenstown. So in any case, we need someone to land first, and we get the gates. So it's all good. Even if you go fast, that's fine. बढ़िया है ब्रो, बड़ी खुशी के साथ जाओ. बिल्कुल भाई, बिल्कुल एकदम फुल एक्साइटेड. ये एवरेज कनेडियन नवराज है क्या? नहीं, वो कनेडियन है क्योंकि दूसरा बंदा है, वो नवराज नहीं है. इज़ योर पेरेंट्स होम? यस पैट, दे आर. कैन यू वॉच माई स्ट्रीम लेटर? या श्योर. Yeah. Okay. All right. Let's start with our flight. So ground power unit, air conditioning unit is connected. Let's start the battery. Can I have pro? I am not doing any giveaway for the pro right now. EXD, I am not doing any kind of giveaway. Are you? No Pat, no, for not for the time being. Please, I have never got it. I mean, I've done a giveaway. I have already given out the prizes to the winners of the giveaway, so I am not going to do any more giveaway, at least for this year. Maybe I might do it next year, but not right now. So yeah, whenever I do a giveaway, you can participate and you can try to get the giveaway. Tomorrow you have flight? No, tomorrow there is no flight. This is the only live stream for the weekend. We'll see next weekend. I might have another live stream, but this is the only one for today, at least. For this week, not this weekend. Not talking about no Pat. Search is in progress. We are searching. Starting the push, long time to start engines. Yep, go ahead and start. Alright, let me start the loading process as well. Let's collect the ATS information. We have everything in place. So yep, let's go ahead and collect the ATS information and let's load the aircraft. Okay, when you do the gift, can I get it? Yeah, if you win you will get it. भाई आपको नाइट में फ़्लाइट करना पसंद है क्या? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है. मेरे को तो नाइट फ़्लाइट, मॉर्निंग फ़्लाइट सब चलता है. अभी अपन जब लैंड करेंगे उस टाइम पे मॉर्निंग हो जाएगा. RFS गेमर भाई वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 7:30 AM को लैंड करेंगे अभी वहाँ के लोकल टाइम पे, तो उस टाइम पे मॉर्निंग वैसे भी हो ही जाएगा. ऑलराइट, वी हैव द ATS इन्फॉर्मेशन. लेट्स स्टार्ट लोडिंग अवर पैसेंजर्स एंड कार्गो. मैं बहुत बार देखता हूँ आप हमेशा नाइट में फ़्लाई करते हो. मैं मतलब कि गेम में नाइट, हाँ अभी क्या बोलते हैं भाई, देखो नाइट में मैं फ़्लाई इसीलिए करता हूँ क्योंकि क्या बोलते हैं, मैं US में बैठा था उस टाइम पे, तो अब उस US में बैठा हूँ तो बाकी पूरी दुनिया में रात रहती है, US में मॉर्निंग होती है. अब क्या कर सकता हूँ मैं, मोस्टली मेरा नाइट फ़्लाइट ही रहता है. आज का जो फ़्लाइट है वो नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग टाइप का है. जब तक अब हम लैंड करेंगे अर्ली मॉर्निंग हो जाएगा. बिग स्ट्रीम डिले, बट दैट इज़ समथिंग कॉमन विथ माई स्ट्रीम्स. A big stream delay, that is a common aspect even now. Okay, alright, I will try to have a look at it. Alright, crew departure, let's see. Yep, boarding is complete, so let's make the announcement. मुझे तो नाइट में करना पसंद है क्योंकि एयरप्लेन की लाइट्स बड़ी मस्त लगती है. हाँ वो तो सही बात है. देखो RFS गेमर भाई वो तो है ही, एयरप्लेन की लाइट्स अच्छी लगती है, लेकिन अभी हर स्ट्रीम नाइट में होता है ना, फिर मज़ा नहीं होता है. आई मीन क्या बोलते हैं, मेरे को थोड़ा सा एक आधा आफ्टरनून का स्ट्रीम भी देखना पसंद है. आफ्टरनून मॉर्निंग का फ्लाइट हो ना तो भी मज़ा भी आता है, उसमें भी मज़ा आता है. ऑलराइट, लोडिंग इज़ कम्प्लीट. वी हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्यूल. ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू चेंज द फ्यूल लोडिंग, बट लेट्स सी. At least the Wi-Fi is better than Xfinity. Yeah, right, but I know it is a lot better than Xfinity. अच्छा है भाई, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करो. सही, हाँ of course. Sorry, I am blocking the way. I am starting my engines. No problem. Take your time. Alright, let's go ahead and reduce some fuel. We don't need 6.5 hours of fuel. Oops.
How are you so good? I mean, I've been playing this game from a very long time. Uh, XD. So, EXD. So, yeah, I mean, I know how to play it. Today is my sister's birthday. Yeah, Sad. I already mentioned about it. So, yeah, happy birthday to your sister Zoya, and may she have a great day, and may she have a blast on her birthday. So, happy birthday to Zoya. Happy birthday to your sister. सब्सक्राइब 1K प्लस है और लाइव में कम आते हैं लोग, किसमें बिजी रहते हैं पता नहीं। अब भाई वो तो मेरे को भी नहीं पता है कि नहीं, उसका जवाब तो है मेरे पास भी नहीं है भाई। ठीक है भाई, देखो लोग हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, सपोर्ट है, वो इम्पॉर्टेंट है। आई एम ऑलमोस्ट एट 1K फ्लाइट्स। वाओ, that's amazing. I haven't been able to fly as much lately, so frankly speaking I am not accumulating a lot of flight points or flights since I have arrived in India, but hopefully I will try to get better at it now, try to fly more, let's say that. Okay, alright, so we have everything in place. It's a 2-hour flight, right? So yeah, let's load some catering as well. Let's load some food for our passengers too. Do you play Microsoft Flight Simulator? No, I don't. I don't play MSFS. Let me know once you guys are ready for takeoff. Pat and yeah, Pat, Evgik, Aaron, Oliver. Whenever you guys are ready for takeoff, let me know so I can capture your departure. Okay, yep. Alright, catering is complete. Let's prepare the doors for departure and cross check. Prepare doors for departure. Ladies and gentlemen, this is your chief Alright, flight we need the ground attendant. power On unit in behalf of this our one to passengers start the and engines, welcome so aboard. we won't be At this time, turning make off sure our your engines seat just belts yet. and tray tables are in their full up I mean, position we won't and your be seat belt is correctly fastened. Also, we won't all electronic take away the devices ground must power be unit. set to Wow, airplane mode until an I'm finding announcement it is made difficult to upon even find arrival. words today. Thank you. Okay, EXD, I get it. I will try to come and I will watch it, but please no more mentions about it. I will come and I will try to watch it. I am ready. Okay, alright, I will record your departure, Pat. Yes, Pat, on my way. Alright, Pat, I am ready to capture your departure. Go for it. Pat, you are in the all black livery for Air New Zealand. Nice, beautiful. Nice one, beautiful rotation. Perfect. Alright, who is next in line? Hello, Philip. How are you doing? Welcome to the live stream. My exams are over now, vacations. Amazing. So, you're going to have a good time now. You're going to enjoy your vacation now. Is it? Forgot to change my livery. I was doing some air trans route for routes all long weekend. No worries, Avik. It's all good. Oops, hold on. Sorry, my bad. Oh my god, thank you, Flight Sim RFS 101 live. My sister is freak out. No problem. You're welcome. It's good. Hope she enjoys her birthday and she has a great birthday. So what are you going to gift her, Saad, on her birthday?
FKQ, alright. See you at Queenstown. Yes, FK, go for it. Alright, nice one. Beautiful departure. Beautiful rotation. There is packed. 6 nautical miles out. Nice one. Beautiful departure. Let's see. Next in line is Oliver. So let's capture the departure for Oliver. My flight might turn the steam. Nice pet, nice. So okay, we'll come to that later. But I have a question for you, which I won't ask now, since you've already mentioned. Alright, Captain Navraj is here as well, and Lewis is here. Nice, beautiful. I shall tip, don't use the weird route after takeoff, go directly to TOC. Alright. Yeah, I saw I did see the map on the FMC. It was weird, for sure. Also make sure that you change the arrival runway to 05. Alright Oliver, I am just waiting for you to depart so that I can start my push. You can start your departure, Oliver. Nice one, Oliver. Beautiful rotation. Beautiful. Perfect. Alright, let's go ahead and start our engine. Let's start with engine number 2. Actually, I should have done engine number 1. My bad. Sorry. Let's start with the safety briefing. On behalf of the crew, we request your full attention as the flight attendants demonstrate the safety. I thought it would be morning here. Take a minute to Queenstown ka view. It will be morning, Phonic BG. Yes, Phonic BG. I did see that we are currently 7th rank in the VA. Yep, I did see that. But yeah, it will be morning, Phonic BG, when we land. Because by the time we land there, it will be almost like 7:30 AM or 8 AM. So we'll get a good view when we arrive in Queenstown. Go directly to TOC to go direct. Yep. Alright, good start on engine number 2. So let's send back the ground power unit. Let's call the pushback truck and let's commence the push. Let's change the arrival runway to 05. What just happened? Where is my TOC? Okay, alright, never mind. Let's go to 20,000 feet. Let's increase the speed. Looks good. Yeah, this is good enough. Let's increase the height of this thing to 10,000 feet for the time being. Yeah, this should be good. Looks good. Alright, let's start the push. And let's start engine number 1. Safety briefing is complete, so let's turn off the cabin lights. Flaps to 15. We are gonna arrive at 6:30. 6:30, is it? Okay. Huh? What is the local time right now? Where is the local time option? Oops.
Yeah, local time is 4:51 a.m. already. And we have 2 hours of flight, right? It's almost 5, so 6, 7, almost around 7:30, Pat. We will arrive at almost around 7:30 or 8 a.m. Alright, let's turn off the cabin lights. Good start on both the engines. TCAS to traffic advisory. Let's turn off the cabin lights. Beacon lights on. Alright, pushback is complete. Taxi lights on, dome lights off. Alright, everything is looking good and we can start our taxi. RFS बहुत मस्त गेम है, बहुत लोग खेलते हैं इसको, हर रोज़ 50 लाख प्लस डाउनलोड. हाँ RFS गेमर है, बहुत लोग खेलते हैं इसको, बहुत खेलते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका. दैट इज़ फॉर श्योर. या 1 hour 40 minutes to go. Wow, that was quick. FL altitude, speed, TOC. Yeah, Pat, I lost my TOC and all the mapping because I changed my arrival runway to 05, so I had to manually change the altitude and speed and all of that. भाई मुंबई कितने साल से आए घर पे? मैं 5 साल बाद आया भाई, 5 साल बाद आया मुंबई. I am over speed, so for me it's 6:30. Oh, okay, I see, Pat, I see. So you are in that race mode. Is the approach hard because of the mountains or it's fine? I see your approach is in the valley. It's going to be a difficult approach, Avdik. I will say that when you're on approach, control the aircraft manually and pay attention. Hi, how are you doing? Welcome to the live stream. Ginji, welcome to the live stream. How are you? अरे भाई कहाँ जा रहा हो? Sorry, my bad. Alright. Flaps 15 gear. Okay. Everything else is looking good. Yep. Alright. Perfect. I always fly manual after descent. Yep. I mean, try to fly manual, or you can also use autopilot, but just make sure that you pay attention to the terrain, or at least pay attention to what's going on, so that you don't run into mountains or valley. Time to watch Netflix. What are you watching nowadays, Pat, on Netflix? तो 5 साल बाद वैसे 1 सेकेंड में मेरे को टैक्सी कर लेने दो. सॉरी, फिर मैं बताता हूँ. वैसे आपकी वहाँ की स्टडी कंप्लीट हो गई. RFS गेमर, स्टडी वगैरह तो कंप्लीट हो गया. 2 मास्टर्स कर लिया भाई वहाँ पे बैठे मैंने. PhD में एनरोल कर दिया था मैं बोला अब बहुत हो गया भाई, चलो वापस. कनाडा का PR मिल गया, चुपचाप कनाडा जाएंगे और नहीं पढ़ना है अभी. Alright, let's prepare the cabin for takeoff. Time zone changed to 3:55 a.m. So Pat, you are racing. What's your speed? I know that you are racing, but what's your speed? Alright, let's ask the cabin crew to be seated for takeoff. Prepare for takeoff. Traffic advisory and resolution. Do we have any ATC? No, right? We don't have any ATC. No one is on the approach. So let's go ahead and line up on the runway. Let's start the strobe lights. And let's turn on the landing lights.
एक सेकंड भाई, बाय बाय ब्रो, अच्छा लगा बात करके, टेक केयर, गुड नाइट. ओके ओके RFS गेमर भाई, गुड नाइट, टेक केयर, see you next weekend, and I will read all the other chats after I complete the departure, after I complete the takeoff. So give me a few minutes. All right, parking brake set, everything is looking good. Let's start the takeoff. Takeoff thrust to 50%. Speed is alive. Takeoff thrust set. V1 rotate. Rotate. Positive rate. Gear up. Alright, let's engage the autopilot, and there we go, beautiful departure out of Auckland. Okay, Young Sheldon, acha, nice man. Young Sheldon is your new TV series to watch on Netflix. Nice. My mom is bringing lunch so I can eat at the same time. Nice, Advocate, nice. Yeah, for the timing, even I am having some luxury of getting lunch and dinner served to me. Alright, passing 1500, flaps up. I want like 10 times. How is the series, Young Sheldon? Is it good? I am time to restart. Okay. क्या बात है, क्या बात है, very good. You should watch Young Sheldon. It's the best. Definitely, Pat. I will try to watch it then, for sure. I have a lot of free time, so I am definitely going to watch it then. Alright, beautiful. Yeah, this is unnecessary turns around the airport, so let's go directly to AKELA. Let's start our turn, and let's increase the altitude to 12,000 feet. Looks good. Alright. Young Sheldon has funny part. I haven't watched it, so I will definitely try to watch Young Sheldon. I mean, I've seen advertisements of it, but I was not really attracted to it by the cover logo, or whatever you call it, the picture that they have used for the web series. So I was like, yeah, maybe I will watch it, maybe I won't, I don't know, kind of a thing. But yeah, now that I have a good reviews from you guys, I will definitely try to watch that series for sure. Alright guys, how many of you guys want to bet that I will do a tail strike when I land this thing? Who wants to bet for a tail strike on landing the ATR? It sadly ended in season 7. Oh, and I think as you have mentioned that it was a good season, and it's a good season to watch, or a web series to watch. I think 7 seasons is pretty good. I mean, just stretching it, when you keep on stretching a web series, it ultimately what do you call it, as gets boring, right? So I think ending a web series on a good note is a lot better, and a good option, rather than going for endless number of seasons. I would say ₹1. This jumps to maybe, yeah, Phonic, it does jump,
But all right, pat is like 1 rupees that I will do a tail strike. I mean, pat you can win a lot, but okay, fine. I mean, frankly speaking, I have a very hard time landing the ATR, and out of 10 times, I usually end up getting a tail strike 6 times. So the probability of you winning and me getting a tail strike is a lot more. Dad died because of heart attack. Uh, wow. So, Avgik, are you talking about your dad, or are we talking about someone else? Alright, where is Pat? In the season 6 or 7. Okay, then that is good. That is good. Avgik, please. Moving forward, please mention in the bracket web series. In the web series. For a second, I thought, what? Where did this come from? Okay, then that's good. That's good to know. For a second, I was like, what? Wait, where did this come from? What happened? All right, let's spot. So Pat, your lead is being threatened by Avgik. You guys are close to each other. Nice. 1 hour and 18 minutes for Avgik and 2 hours and 7 minutes for Pat. Alright. Then we have Oliver. Followed closely. Not following closely, but yeah, at a safe distance. Then we have Oliver. Then that's me. Then we have Captain Navraj. And then we have Captain Lewis. Nice. Beautiful. Alright, passing 10,000 feet, let's turn off the seatbelt signs and let's turn off the landing lights. Crew departure. I'm flying at 6k. Oh, but you can increase the altitude, Pat. I think it's unnecessary to fly at 6k for such a long distance. Yeah, that's too low. Alright, let's go ahead and change the view. Nice. And let's reduce the game sound a bit. It's too much. So let's reduce it to 31%. Perfect. Okay, climbing. Yes, Pat. Start your climb. और नवराज भाई, आजकल कितना स्पॉटिंग कर रहे हो आप एयरपोर्ट पे जाके? हमको सुनने में आया नवराज भाई बहुत बहुत एयरपोर्ट पे जा रहे हो आजकल. BBC न्यूज़ में आया था. कैन आई बी मॉडरेटर प्लीज़? नॉट येट, Avgik. I think we have multiple moderators right now on the channel. I know that I haven't been doing live streams as often as I did, but as I used to do. So yeah, give me some time. We'll see.
we'll see. Once I start doing this live streams more frequently and more often, I will start adding moderators, and I will also start removing those who are inactive in the chat, or those who don't come regularly and often to the live streams. I will start removing them from the moderators, and then I will start adding new moderators. But after things get back on track, and let's just say after I start uh, doing this live streams on regular basis. So far so good. Nice. All right, ब्यूटीफुल. अरे कैसे हो एहसान भाई? वालेकुम अस्सलाम. वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम. क्या हाल चाल? ऑल गुड ब्रदर, ऑल गुड. अभी तो इंडिया में बैठा हूँ मैं. आप बताओ भाई, क्या हाल है? टुमारो मी बिजी. अरे ईद मुबारक इन एडवांस एहसान भाई, ईद मुबारक इन एडवांस. With 320 at 351 at 350 knots. I think that is Captain Navraj, right? Yeah. ना नवराज भाई क्या कर रहे हो? हाँ नवराज भाई, कौन सा F1 रेस में दौड़ रहे हो आप? या ना, तो दैट्स बेसिकली फोनिक बीजी, कैप्टन नवराज. भाई रनवे पे चढ़ गया था, तभी शायद बीबीसी पे आ गया होगा. अरे बिल्कुल, बीबीसी वालों ने बोला कि ये फोनिक बीजी करके एक बंदा है, वो रोज़ आता है इधर स्पॉटिंग करने के लिए. भाई अपन भी बढ़िया है, बताइए ऐसा ना, अपन भी सब बढ़िया. कितना टाइम है फ्लाइट को? अभी 2 घंटा और 15 मिनट है एहसान भाई. स्पॉटिंग का वुड आ गया तो क्लोजेस्ट स्पॉट देखने चला गया था. बस फोनिक बीजी इसी वजह से आया था बीबीसी न्यूज़ पे. इसी वजह से वो बीबीसी न्यूज़ वालों ने बोला कि भाई एक बंदा है जो रोज़ आता है स्पॉट करने के लिए. अरे नवराज भाई, F1 रेस में थोड़ी चल रहे हो आप, सीधा 350-400 नॉट पे उड़ रहे हो. Yeah, that's right, Nacho. I'm looking at them on the map. One is Captain Navraj Phonic BG, who is rushing, and there would be someone else as well. That is Pat. Pat is not rushing. He is flying. Who else is rushing? I don't see anyone else rushing at the moment. Avgik is flying within the speed limit. Navraj was rushing at 330. Oliver is flying within the limit. Yeah, I don't see anyone else rushing at the moment. Lewis or Nacho. A couple of them were. Yep.
भाई ये ख़त्म कर, एक फ़्लाइट लगानी पड़ेगी बिकॉज चिराग भाई अभी आगे चले गए मेरे से रैंकिंग में, एंड एंड ऑफ मंथ में आने नहीं दूंगा उनको फर्स्ट, तभी F1 रेस लगा रहा हूँ. अच्छा, नाउ आई सी वाई फोनिक बीजी इज रशिंग बिकॉज ही wants to be on the top of the leaderboard in the virtual airline. Now I get it, foनिक बीजी. Very good, very good. Continue. All the best. स्पॉटिंग का भूत मेरे में आ गया. अरे फोनिक बीजी अभी वो भूत को बरकरार रखो. जब मैं कनाडा आऊँगा तो अपन जाएंगे स्पॉटिंग करने के लिए, और अपन मस्त स्पॉट करेंगे सब, एक से एक एयरक्राफ्ट स्पॉट करके. तो भूत को बरकरार रखना है, उसको भगाना नहीं है. ब्रो आई डिस्कनेक्टेड, आई एम जस्ट गोना गेट ऑफ. अरे क्यों, क्या हो गया पैट? अरे करो यार, फ्लाई करो, फ्लाइट ख़त्म करो, क्या टेंशन ले रहे हो पैट? चिलैक्स. you would have been in the lead पैट, you would have been the first one to land. अच्छा चलो कोई बात नहीं, बट थैंक यू पैट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. मिलते अपन अगले हफ्ते, मिलते, चलो नेक्स्ट वीकेंड मिलते अपन. No worries at all, Pat. No worries at all. I know, Pat. You are mad. अरे पैट एक काम करो ना भाई, यहाँ से ज्वाइन कर लो ना. अपना बीच में कितने सारे एयरपोर्ट है, ये यहाँ से आ जाओ, क्राइस्ट चर्च से आ जाओ, नहीं तो फिर या इधर से आ जाओ ना. ये कौन सा है? NZWN. ये आई थिंक वेलिंगटन का एयरपोर्ट है. वेलिंगटन या क्राइस्ट चर्च से आ जाओ फिर. I am going to fly the A320 over you. Yeah, you can fly the A320 over me, just don't pass through me. You can pass over me, that is fine. And since you are flying over me, let me capture your... Yeah, there you are. Nice. Beautiful. I am still gonna chat, no point. Okay. चलो, no problem Pat, no problem. नया स्पॉट भी मिल गया, एकदम फेसिंग रनवे, कोई रोड पे खड़ा नहीं होने, अपने जहाँ है वहाँ, वो लैंडिंग लाइट्स के नीचे ही. अरे क्या बात है, बस फोनिक भी ऐसे आप जो है स्पॉट्स ढूंढ के रखो, ठीक है? फिर अपन एक दिन महफिल जमाते हैं. है कि नहीं? The A320 almost ran you over and they crash. Are you talking about this one, Captain Navraj? Yeah, I know Captain Navraj almost did crash me over, and he did flew right through me, almost. Are you guys able to hear the music in the background? Alright, let's take a look at this cockpit. Actually, I haven't had a look at the cockpit in a long time.
Nice. This looks good. Let's turn on the FMC on this one. Yeah, FMC. Do we have anything here? Nope. Engine is fine. Primary flight display navigation. Primary flight display navigation. That looks good. What else? Okay, I think this setting is good enough on this one. Nope. अरे क्या बात कर रहे हो यार, इतना बढ़िया म्यूजिक बज रहा है. Which RFS is getting more boring and bad. Why? What happened, Pat? Why do you think so? That it is getting more boring and bad? Because it keeps on disconnecting. What makes you think that it's not as interesting as it used to be? Or is it more like we just want to see something new, or try out something different, something new? Yes. Okay, so you just want to try out something new, right? Yeah. I mean, yep. That's always a good option actually, to try out something new, right? Even I'm going to do that very soon. Once I enter Canada, I'm definitely going to either try this Aerosfly FS Global or Infinite Flight. That's for sure. I mean, I have been sticking with this RFS for a very long time. It's almost been a year. I'm just doing RFS on the channel. So yeah, I will definitely try to add something new to this. Maybe Infinite Flight or maybe this Aerosfly FS Global. Let's see which one is more interesting. Aerosfly FS is bad. I tried it and it's awful. Do MSFS with membership. Yeah, I will. Yeah, I mean, Pat, I will do MSFS with membership, but then I also need a proper setup. I need the proper what do you call it as the desktop and CPU configuration. I need the high-end CPU. I need a proper desktop, a proper setup with all the controls from Thrustmaster and everything. Then it's fun to do MSFS and fly MSFS. So for MSFS, it will take a lot more time. I think if Aerosfly FS is bad and it's like awful, then I will go with Infinite Flight. I will try to see how Infinite Flight is and what Infinite Flight has to offer. It has best satellite view graphics of land in 2020 and back, and they have lot of buildings around in airport and in whole city around the airport. If they add this, it would be the best game. Yeah, that's true for me. Yeah, I mean that then it would be a lot more interesting. I agree with you, but I think addition of an interactive cockpit would be a lot better option than just adding the buildings and what was the other thing? Satellite terrain, right? Yeah, satellite view. I think adding this thing, interactive cockpit, would be a lot better. I mean, at least if they don't want to activate all the buttons and everything that is there in the cockpit, at least the throttles, gear up, gear down option, setting the parking brake, starting the engines, at least the basic controls, they can make it interactive, and it would be much better to fly, I guess. सच डार्क भाई, क्या हो गया पैट, ऐसा क्या हो गया? RFS इज सच अ डार्क भाई. भाई लगता है भाई कुछ गलत हुआ है पैट तुम्हारे साथ. Just came back from eating. What did you have for lunch?
avgate. And some players can't play this game. I mean, see, I mean, they just have to get used to it. It's not that bad. I mean, like Phonic BG, just having an interactive throttle and interactive startup of engines, and what you call it as gear up, gear down. I mean, that is like very basic and easy. If that is, if that also players can't do, then what's the point of flying or playing flight simulator? I had sushi, small plate of sushi. Wow, beautiful, beautiful, nice. Hello Keshav bhai, how are you doing? Welcome to the live stream. क्या हाल चाल? कैसे हो? अरे मैं बढ़िया हूँ भाई, मैं बढ़िया हूँ. आप बताओ क्या हाल चाल, आप कैसे हो? आजकल तो भाई हम काफ़ी बिजी चल रहे हैं यहाँ इंडिया में बैठे बैठे, पर ठीक है, चल रहा है. अच्छा खाना पीना मिल रहा है. हाँ भाई, मैं मुंबई आ गया. अभी 10 दिन पहले ही आया. मैं 20 तारीख को मैं आया था मुंबई में, तो अभी तो हूँ, मैं अभी मुंबई में ही हूँ. अरे केशव भाई, अपन ने वो जो हाँ मिलते हैं अपन. मैं वही बोलने वाला था नेक्स्ट कि लेट्स डू दैट व्हाट वी प्लान, गोइंग फॉर दिस प्लेन स्पॉटिंग एट मुंबई एयरपोर्ट. लेट्स प्लान दैट one day, maybe over a weekend or something. Maybe over a weekend or something, Saturday Sunday. Let's plan that. Let's go for some plane spotting. कुछ करते, let's do something. हाँ नेक्स्ट वीक जा सकते. नेक्स्ट वीकेंड क्या, 5 और 6 तारीख ना? हाँ 5 और 6 तारीख को लेट्स डू दैट. वी कैन गो ऑन 5th and 6th or 6th, or whatever is comfortable. We can go for plane spotting. मैं भाई I'll text you on Discord पे अपन प्लान करते और चलते अपन. Alright, let's start our in-flight service and let's offer some meals to our passengers on board. So let's go ahead and turn on the cabin lights.
Oops, in flight. Let's go with snacks. Sure, yep, it's two. अरे केशव भाई, वीए में मेरे लिए जगह बचा के रखे हो कि फुल कर दिए वीए पूरा? हाँ, हम अभी 2 महीने के लिए क्या बोलते हैं, थोड़ा एक्टिव नहीं है, लेकिन हम एक बार कनाडा आ गए, एक बार जॉब मिल गया, फिर हम एक्टिव हो जाएंगे। वीए में जगह बचाए हो ना कि चला गया? सो मुंबई इज क्वाइट ह्यूमिड एंड हॉट, डिड यू लाइक द वेदर? Do I have an option? Do I have a choice? Keshav, tell me, do I have an option or a choice? Whether I like it or not, I have to be here. I get it. But I mean, it is humid and hot, uh, but not bad. I kind of like it, but I don't as well at the same time. You get a lot of precipitation and sweat, so that's the reason I don't like it. But I mean, it's fine. Hello, Lofi Music. How are you doing? Welcome to the live stream. How are you, brother? आपके लिए बना देंगे जगह भाई। अरे क्या बात है केशव भाई, क्या बात। वाह, बढ़िया। फिर जैसे ही मैं कनाडा पहुंचता हूँ, मैं आपको टेक्स्ट करता हूँ, भाई आई एम बैक इन फॉर्म करके। Oh, okay. I just realized you are unable to see my throttle and thrust settings, right? Okay, so I need to make some changes to how the screen appears. Ah, there was an update on this Prism Live. I was under the assumption that it's like it's the default setting that I have, but nope, it's not. So I need to change the settings a bit so that you guys can see the entire screen and you guys can also see the throttle settings as well. Okay. By the way, we are on 6th in the yeah Keshav, I saw that. I saw at the start of the month you guys were somewhere on the 14th or something, like first 10 days or something, and then I checked it a couple of days ago. You guys were on 7th, and आज अभी 6th पे हो। क्या बात है केशव भाई, क्या बात है, अमेजिंग, ब्यूटीफुल। लेट्स कीप द मोमेंटम गोइंग। क्या बोलते हो केशव भाई? When are you landing? My 1 hour and 47 minutes.
अभी 147 मिनट्स दिखा तो रहा है, बट मेरे को लगता नहीं कि इतना ज़्यादा टाइम लगना चाहिए केशव भाई। अभी देखो 1278 पे डाला हुआ ना इसको, 1 hour and 37 minutes। Alright, let's turn off the cabin lights. In-flight service is complete. But I don't think so it will take that long, 1 hour and 37 minutes, because we are what, 67 nautical miles and then 300 another nautical miles। इससे कम टाइम में पहुंच जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली 1 hour 30 minutes में हो जाना चाहिए, क्या पता, चलो देखते हैं। हैप्पी गुड़ी पड़वा टू ऑल। यस केशव भाई, हैप्पी गुड़ी पड़वा टू ऑल। Alright, let's see how are we doing. Alright, Avgik is in the lead, then we have Navraj, then we have Lewis, then we have Oliver. Alright, so I'm going to be the last one to land today as well. चलो ये भी ठीक है। आज ग्रुप फ्लाइट नहीं हो रहा भाई, ग्रुप फ्लाइट ही कर रहे केशव भाई। आज की फ़्लाइट पे अपने को किसने किसने ज्वाइन किया है। आज की फ़्लाइट पे कैनेडियन एवकिक ने ज्वाइन किया हुआ है, फिर कौन है, नवराज है, फिर कैप्टन लुइस है, फिर अपना ओलिवर है, एंड पैट था बट वो डिस्कनेक्ट हो गया। तो आज भी अपना ग्रुप फ्लाइट ही था भाई। जब भी केशव भाई मैं लाइव स्ट्रीम करूँगा ग्रुप फ्लाइट ही रहता है। Alright, 1 hour and 31 minutes. Nice.
Let's change the view. Mm,
क्या हो गया भाई? वाई इज द चैट सो साइलेंट? क्या हो गया? चले गए क्या सब? I am there. अच्छा, hello RFS. Onyx, how are you doing? Welcome brother, welcome. हो शार्प टर्न है भाई, खतरनाक टर्न मारा, शार्प, एकदम शार्प टर्न, गजब. क्या हो गया? ओवर स्पीड? ओके सर, सॉरी सर, होल्ड ऑन. लेट्स सी. वेटिंग फॉर योर लैंडिंग. अरे क्या बात है केशव भाई, आज भाई अभी बैटिंग चल रहा है. आपको सट्टा लगाना, आप लगा सकते हो. वैसे पैसे वैसे नहीं बांट रहे, पर क्या बोलते हैं, बैटिंग इस बात पे चल रहा है कि क्या बोलते हैं अपना, क्या मैं आज टेल स्ट्राइक करूँगा कि नहीं करूँगा ATR को लैंड करते हुए. विल आई डू अ टेल स्ट्राइक व्हाइल आई लैंड दिस एयरक्राफ्ट? यस और नो? क्या लगता है भाई आपको? ये किसका नाम बोल दिया? कौन सा? RFS ऑनिक्स एलआर, वो है ना? RFS ऑनिक्स एलआर करके बोला भाई मैंने. और कौन सा? अरे वो केशव भाई के ऊपर RFS ने मैसेज डाला था ना एक, वो उसने रिट्रैक्ट कर दिया मैसेज, फ़ोन एक बीजी, लेकिन उसने एक मैसेज डाला था तो उसको मैंने हेलो बोला. अब क्या मैसेज डाला तो मेरे को भी नहीं पता, उसने रिट्रैक्ट कर दिया तो पता नहीं. वो मुझे शो नहीं हो रहा था. वो क्योंकि उसने रिट्रैक्ट कर दिया ना मैसेज, इसलिए वो आपको शो नहीं हो रहा फ़ोन एक बीजी. अरे कुछ तो लिखा था, मेरे को भी नहीं पता क्या लिखा था. ठीक. Soon descending, all right. I already started my descent. Actually, I will now be somewhere around 10,000 feet. Yeah, I can do the in-flight announcement of descent. Uh, yeah, let's also turn on the seatbelt signs.
No, not just yet. I will turn on the seatbelt signs when we are approximately 30 minutes out. TOC TOD साथ में ही अरे नहीं फोनिक बीजी एक्चुअली I changed my runway. I changed my arrival runway to 05, so it basically messed up the TOC and TOD and the entire flight plan. So basically it just gave me a direct route from this thing. What is this? GULTU to FL. It eliminated the TOC and TOD from my flight plan. तो आई मेड सम मॉडिफिकेशंस, तो इस वजह से वो दिख रहा नहीं है. 30 minutes, all right, perfect. Have a safe landing. I have 1 hour and 17 minutes remaining, so still a lot of time. I can reduce my airspeed a bit so that I can start my descent. Yeah, let's come down to 235 and let's start the descent actually. What do you mean? Let me just translate. Is there another flight for longer? No, Naito. This is the only flight for today. There won't be any other flight after this. But yep, long time because you are going directly to FL. So the FL speed is 239. You got a prop. Yeah, exactly. Right, it's going to be a while. Yep, ATR is slow. That is true. But at least I will start my descent. I will come down to 10,000 feet and then I will increase the airspeed. So that way it won't take as long as it says it will. But yep, ATR is slow. I chose ATR because I haven't done an ATR live stream in a while, and I think that was requested, or so someone wanted to see me do a different aircraft. So yeah. I can't see RFS Phonics. Where is he? RFS Phonics. Do you mean RFS Onyx? Phonic BG. Do you mean RFS Onyx?
Okay, I know that a lot of you are asking me this question in the comment section about doing an RFS Pro giveaway or giving away an RFS Pro for free, or do a RFS Pro giveaway. So I have already done this RFS Pro giveaway in February. I'm not going to do it anymore, at least for this year. Maybe I might do it next year. Maybe after that, I don't know. But there is no giveaway that I'm going to do anytime soon. So I know a lot of you have been asking me this question in the comments. So nothing is coming out anytime soon. Uh, yeah, can't see him chat. That's what he is not in the chat. I think he left. I don't know, but he was in the chat. He did send a message, then he retracted the message. So I don't know where he is, but yeah, he was here for a while. I don't know where RFS Onyx is right now. No, not RFS Place. RFS Onyx. RFS Onyx is a different person from RFS Place. In real, I traveled in this aircraft. Its engine sounds are really loud and disturbed me a lot inside the cabin. Of course, Keshav. That is true. You won't be able to sleep in this aircraft. It's too noisy. Props are just too noisy. You definitely need a earbud or a earplug to keep yourself safe from that prop noise. Now descending. All right, FG, have a safe landing. Still night. We can't enjoy the view. Yeah, I hopefully it will be morning. Let's see what the current time is. Local time is still 4 a.m. Seriously, I thought it would definitely be 4 or 5 a.m. I mean 7 a.m. Wow. Yeah, it's going to be night when we land, so we won't be able to enjoy the view. I was under the impression it will still be morning. It will be an early morning, because that's what Google was telling me, that like basically I searched as what is 11:30 p.m. or 11:45 p.m. Indian time to New Zealand time, and it was like at 7:30 a.m. So I was like, okay, so we will enjoy some morning view or the early morning landing. But it doesn't look like we will have an early morning landing. Yeah, yep, it will be difficult. It's a hard approach plus small. Arey, Phonic BG, change the runway to this thing. I changed my arrival runway to 05. 05 is a better runway than what is it, 14. Choose runway 05 for your approach and arrival. That will be a safe option.
Yeah, I know it will be difficult to land an A320 on 1.4. You have to choose 05 for A320. I've already changed my arrival runway to 05 for ATR. A350-900 is the most quiet aircraft. It doesn't even feel like any sound inside. I know that, Keshav. I did fly on this A350-900, the Turkish Airlines that I took from Denver to Istanbul. It was beautiful. No engine sounds, no noise, very quiet. It was a good flight, but not the best landing. It slammed the aircraft on the runway, but uh, yeah, overall the flight was really good. You are safe today. Yeah, exactly. Right, I am safe today. Yeah, change the runway to 05. Then everyone will be safe. I have 210 flights with the A321 Neo. I have lots of experience. Wow, wow. So you are a pro with A321 Neo then, Avgik. So how is Istanbul airport in real? It's good. Yeah, I like the Istanbul airport. It's good. It's well designed. It's beautiful. It's really I would say it's exactly the same as what we have in RFS. What we see in RFS, like there are this six, no, not six, but five terminals, or five. What do you call it as? Concourse. There is one terminal and five concourse. A, B, C, F, and E, I guess, or A, B, C, D, and F. I don't remember exactly, but yeah, like those five concourse, and then there is one terminal, and when you enter the terminal, it's huge. It's huge. Like you will you will walk for almost half a mile, and with all the shops around. So yeah, it's beautiful. It's good. You can pass your time if you have a layover of like 4 hours. You can easily spend there. But it's a good airport. Okay. All right, funny baby. So I know how it works. Yep. So I mean, Avgik, you have flown on like, are you talking about IRL, like in real life? You have flown on A321 Neo, or like in game? I want to visit Swiss airport as they have spotting deck just near the runway. Yeah, I mean you will also find those spotting decks at Sydney airport. Phonic PG. I think it's at Sydney airport, as well as what was the other one? Perth maybe. I don't remember, but maybe Perth and Sydney has the spotting deck as well. 210 in game and 3 times in real life. Oh, nice, nice, nice. Yep. Yes, that's how my flight was. I had like a 3 hour layover at Istanbul.
How is Turkish in terms of hospitality, and are seats really comfortable just like Emirates? I mean, I would say seats are comfortable. That is for sure. I did not have any issues with the with the seating arrangement. That was comfortable. I had a good sleep. It was comfortable to sit on. As far as hospitality is concerned, I mean, they do offer meal service. If you have a taste for Mediterranean food, if you like Mediterranean food, then you will enjoy, right? Then you will enjoy the hospitality, then you will enjoy the food, you will enjoy everything on board. But if you don't like Mediterranean food, then I would say that it's not as good as Emirates, right? Because like when I was on my flight from Denver to Istanbul, they had a proper Mediterranean food, which was more like hummus, salad, and all of that. But the flight that I took from Istanbul to Mumbai, that had proper Indian food like palak paneer, dal, rice, and what else was there? There were a couple of other items which I don't remember now. But the flight from Istanbul to Mumbai had a better food in terms of our taste and our liking. But yeah, I mean, they offered a sandwich as well. Like on the 6.5 hour flight that I had from Istanbul to Mumbai, they offered two meals. One was a sandwich, one was like a dinner, and then they also offer tea, coffee, or any soft drinks that you would like to have with the meal that they provide. And yeah, it was good. I would say I would compared to Emirates, not really. Uh, let's say if Emirates is 10 on 10, Turkish will be somewhere around 7 on 10. I will give 7 on 10 to Turkish if I have to compare it to Emirates. That would be a fair comparison. Uh, Maybe because lots of Indians travel, so the meal was, yeah, exactly, Keshav. I like, see, basically the flight that people take from Istanbul to Mumbai, 80 to 90% of the uh, travelers are Indians, so they have the food accordingly. They offer food accordingly. That's for sure. But yeah, I mean, on Montreal to Lisbon, they serve the meals and a banana bread. They serve hot meals and a banana bread. Nice, nice. That's good. Are you talking about Turkish Airlines itself? Like, I mean, of course, they served hot meals on this flight as well. It was a hot meal. I mean, of course, not hot meal, but they did put in some efforts to at least microwave it and make it hot. But yeah, it was good. I will give 7 out of 10 to Turkish if I give 10 on 10 to Emirates. So you came on 777 to Mumbai. Yep. Yeah, so that was a 777-300 ER. That was the aircraft to Mumbai, and then the Denver to Istanbul was A350-900. No, air transit actually. Oh, okay. All right, air transit. Nice. I thought you meant this Turkish Airways.
Now on final approach, hopefully I land safe. Yep, absolutely. Have a safe landing, Abhishek. Have a safe landing. Hopefully you will land safely. Alright, we are at 10,000 feet. Let's increase the airspeed a bit. Overspeed, seriously? Okay, let's go down to 260. There are some who are already approaching. Yes, Nacho. Some of them are already about to land. Yep. There should be direct flights from Bombay to I don't get why there aren't. Yeah, exactly. I know, Keshav. There used to be direct flights from Mumbai to Toronto. I have seen that in the past. But yeah, I was searching for the flights and I didn't find any actually. There used to be one flight from Air Canada and then there used to be one from Air India. But I don't see them anymore. So yeah, maybe they just stopped operating the flights between direct flights between this thing Mumbai and Toronto. Alright, Avgeek is about to land 2 nautical miles out, almost about to touch down now. हेलो हेलो सुबेश, क्या हाल चाल भाई? मैं ठीक हूँ भाई, मैं ठीक हूँ. आप कैसे हो? क्या हाल है? मैं सोच ही रहा था आज सुबेश दिखा नहीं. कहाँ गए भाई सुबेश भाई? अपना दिखे नहीं अपने को. मेरे को पता नहीं था लाइव हो गया. अरे कोई बात नहीं सुबेश भाई, मेरा वही है. अभी कैसा नहीं, अभी इंडिया में हूँ तो मेरा कुछ फिक्स नहीं है कि मैं कभी लाइव आऊँगा कभी नहीं आऊँगा. किसी दिन आ जाता हूँ किसी दिन नहीं आता हूँ, ऐसा है. अभी कुछ फिक्स नहीं है मेरा. तो क्या बोलते हैं, नहीं नेक्स्ट वीकेंड मोस्ट प्रोबेबली मैं आऊँगा शायद. नेक्स्ट वीकेंड जब 4th 5th और 6th है ना, तो शायद 5th और 6th दोनों दिन आऊँगा लाइव.
ऐसे ही छोटा कुछ 2-2 घंटे का भी करेंगे, बट मेरा प्लान है कि नेक्स्ट वीकेंड दोनों दिन लाइव आता हूँ मैं, क्योंकि ये मैंने मिस कर दिया था। अभी ये 29th को मिस हो गया, 22nd को मिस हो गया, 23rd को मिस हो गया, 3 दिन तो कंटिन्यूस मिस हो गया। तो अभी अगले 3 दिन 5 और 6 तारीख को आना है मेरे को, टारगेट है मेरा। कल देखा था, हाँ कल नहीं था, सुबह कल नहीं था, 29th को नहीं किया था मैंने लाइव, लेकिन आज कर रहा हूँ मैं, इसलिए आज नहीं देखा मैंने, मिस कर दिया। अरे कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट वीकेंड को करूँगा भाई। नेक्स्ट वीकेंड को आप देखते रहना, सैटरडे संडे दोनों दिन करने का मेरा कोशिश रहेगा, बट अगर नहीं हो पाया ना तो मैं संडे को तो ज़रूर करूँगा, या तो सैटरडे को। नेक्स्ट वीकेंड भाई चेक करते रहना, दोनों में से किसी एक दिन तो आऊँगा मैं लाइव। Just landed very hard because of short runways, touchdown early but good center line, but not my best, but good because of short. Yeah, exactly. I mean, see, it is a short runway, you have to land firm. If you don't do a firm landing, you will eventually overrun. So there is no other option but to do a firm landing. So frankly speaking, a firm landing is the best landing on this runway. What would be important is to touch down in the zone and on the center line. And that would be the most important thing on this particular approach and this particular airport, rather than a butter landing. पोस्ट पर देखा था कुछ नहीं था कल, इसलिए ज्वाइन नहीं करा। अरे कोई बात नहीं यार, सुबह सुबह कोई बात नहीं, आप चेक करते रहना भाई। अभी मेरा कैसा है ना, थोड़ा टाइमिंग भी ऊपर नीचे होगा पोस्ट डालने का, क्योंकि अभी इंडिया में हूँ ना भाई, तो मेरा वो टाइमिंग नहीं बैठ पा रहा है। मैं जब यूएस में था तब मैं एक टाइम पे पोस्ट डालता था, अभी वो टाइमिंग मेरा बैठ नहीं पा रहा है इंडिया में। तो आप जो है, आपको जब भी मौका मिला आप देखते रहो बस, नहीं तो ये 9:30 AM 10:30 AM जो है ना अपना माउंटेन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब आप अभी टेक्सास में हो ना, तो आपके सुबह को 10:30 बजे या 11:30 बजे के बीच में आप चेक करते रहो। मैं कभी ना कभी तो आपको ऑनलाइन दिख जाऊंगा सैटरडे या संडे को लाइव स्ट्रीम करते हुए। बाय द टाइम यू विल लैंड इट विल बी सनराइज एट 6 AM, इज इट? Yeah, I still have 46 minutes to land. No, it is not 6:30 AM. Phonic BG. Not 6 AM. Local time is like what is it? 4:17 AM. So I am still not confident that it will be sunrise. I guess cause not much passenger traffic between Bombay to IOIZ as compared to North India, specifically Delhi and neighboring. Yeah, exactly, Keshav, exactly. It's most likely because of the passengers and not a lot of traffic, I guess. That's what that is. Yup. Okay, Kunal bhai. Yes, bhai. Taxiways are so thin. Yeah, I know, Avgik. I know. This airport is not designed for any wide body aircraft. I think the maximum that this might handle is an A320. A320 would be the maximum that this thing can handle. Here it's 6 AM. Where? Phonic BG. Well, where are you? You are about to land? That is Oliver. That is Lewis. Oh yeah, you are about to land, right, Navraj? Okay, so Navraj says if it's 6 AM for him, then it will be 6 AM for us. I am the control tower on the radar. I get the A320 Neo
on approach and the A320. Okay, yeah, Nacho, go for it. You can be on the approach and you can be at the tower. No problem at all. Go for it. And yeah, thank you for letting us know. We will now contact you when we are about to land. Yeah, minus 710 feet per minute. That's Ryanair, but good thing Avgit, don't take the name of Ryanair. From nowhere, Ryanair will pop up in the chat now. But yeah, definitely a good landing, as you mentioned. Well, this was fun. Bye bye. See you next weekend. Maybe have a great rest of flight. Fly safe. Thank you for joining in, and it was a pleasure flying with you. I will see you next weekend for sure. There will be one live stream either on Saturday or Sunday. Let's see what we do. But definitely there will be one live stream. So I will see you again next weekend. Until then, have a great week ahead, and I will see you next weekend as well. I don't know how in real life here 737 A321 lands, cause I landed on landing mark and just a second after red lights came giving runway and saying, yeah, it is very difficult, Phonic BG. It is very difficult. You need to have a very firm landing on this one. Only then you will be able to stop in time. You need to have a firm landing. There is no other option.
Captain Lewis on board. You two are missing. Who is missing? Captain Lewis. We have to taxi back on runway. That's not taxiway I found in flight radar. Huh? मतलब what do you mean phonic PE? So basically there is no taxiway. You just have to backtrack on the runway till you reach the terminal. Is that what you mean? Okay, alright. I see. आज एक ही फ्लाइट है. हाँ भाई केशव भाई, आज एक ही फ्लाइट है. अब इसको लैंड करवाएंगे फिर हो गया आज का बस. आपने हमारा वीए का ट्रेलर देखा? नहीं भाई केशव भाई, मैंने वो ट्रेलर नहीं देखा वीए का. मेरे को टाइम ही नहीं है कुछ भी ट्रेलर वगैरह कुछ भी देखना. मैंने तो वीए में क्या चल रहा है वो भी नहीं देखा भाई. मैं डिस्कॉर्ड खोला, मेरे को 30-40 पिंग दिख रहा था उसके अंदर टैग किया हुआ. मेरे को तो भाई कुछ नहीं पता वो 30-40 पिंग क्या है, कितना चैट चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ नहीं देखा भाई मैंने. मेरे पास उसका टाइम ही नहीं मिल रहा है मेरे को उसके ऊपर देखने का, ध्यान देने का. तो अभी के लिए तो मान के चलो कि क्या बोलते हैं ना, टोटल डिस्कनेक्ट पे ही चल रहा हूँ मैं. हाउ वाज योर लैंडिंग?
Have a safe landing, Lewis. Have a safe landing and let us know how your landing went. कोई बात नहीं, अभी डीएम कर देता हूँ, देख लो। हाँ भाई मेरे को डीएम कर, देखता हूँ, मैं देखता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को कर दो डीएम, चेक करता हूँ मैं। Alright, 30 minutes remaining. Now let's turn on the seatbelt sign and let's prepare the cabin for landing. Let's turn on the landing lights as well and let's go down to 9,000 feet. Alright, perfect. No sunshine. क्या हो गया फोनिक बीजी? Yeah, I don't know. For me, the local time is still at 4:32 a.m. How is it 6 a.m. for you, Phonic BG? मतलब it should be 6 a.m. What you are seeing is correct, but I guess for me it's just not working. मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे में वो टाइम चेंज ही नहीं हो रहा जैसे उसको होना चाहिए। खैर क्या पता यार, जो भी है। वाह केशव भाई वाह, क्या ट्रेलर है भाई, मज़ा आ गया। किसने बनाया? फोनिक बीजी ने बनाया क्या केशव भाई वो ट्रेलर? खतरनाक बनाया भाई, मज़ा आ गया वो ट्रेलर देख के। बहुत सही है भाई, बहुत सही बना है।
Alright, we also passed 10,000 feet, so landing lights is on, seat belt is on, TCAS is on, everything else is good. Alright, perfect. So now, still 21 minutes to go. Okay. अरे गजब गजब काम किया फोनिक बीजी भाई, आपने आपने ट्रेलर बनाना खतरनाक बना भाई, बहुत बहुत सही काम किया, मज़ा आ गया देख के। गजब गजब किया। अनीस भाई किधर गए भाई? आज पूरे लाइव स्ट्रीम में अनीस भाई दिखे नहीं अपने को। अनीस भाई को ढूंढना पड़ेगा, अभी किधर गया वो जाके। अच्छा लगा ट्रेलर, नवराज ने बोला आइडिया मेरा था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कैसा बहुत तगड़ा ट्रेलर बना हुआ, मज़ा आ गया देख के, खतरनाक था एकदम। मतलब बहुत बहुत सही पब्लिसिटी है भाई वो, बहुत बहुत अच्छा ट्रेलर भी बहुत अच्छा बना, और पब्लिसिटी भी बहुत सही किया है, मज़ा आ गया देख के, तो मज़ा आ गया भाई।
हेलो आर्चर भाई, क्या हाल चाल आर्चर भाई, वेलकम वेलकम। चुपचाप क्रेडिट ले लो केशव भाई। अरे चुपचाप क्रेडिट ले लो केशव। अच्छा, आर्चर भाई का भी हाथ था क्या इसके अंदर? लगता है आर्चर भाई ने भी मेहनत किया ना। Alright, let's go to 10,000 feet. Too close to comfort. Alright, 16 minutes out. Yeah, that's Oliver. Nice. भाई साहब, गजब गजब माउंटेन से भाई, गजब माउंटेन से। रुको यार, इसको एक को अपन ये करते हैं, क्या बोलते हैं, सर्कल व्यू बनाते इसका। हाँ, अब मज़ा आएगा। आइडिया था तो था, उसको मैंने और अच्छा कर दिया। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है फनी। कुणाल भाई, आपने सुनाया नहीं पायलट को जब हार्ड लैंडिंग हुई इस्तानबुल में? अरे क्या सुनाऊंगा केशव भाई, उसको बेचारे ने लैंड किया, वो अच्छी बात है ना। लैंड करना इम्पोर्टेंट है भाई, तो क्या ही मैं उसको सुनाऊं भाई। ठोका तो नहीं ना उसने, बस सही जान बची, वो ज़्यादा ज़रूरी है। लैंड कैसे क्या, उससे मेरे को क्या लेना देना, वो जाने और उसका कंपनी जाने और मेंटेनेंस वाले जाने।
बोलना चाहिए था तेरे से अच्छा पायलट मैं हूँ आरएफएस में A380 बटर लैंड करता हुआ। भाई वो मेरे को बोलते एक काम कर ये वाला करके बता, रियल लाइफ में तू करके बता तो मारूँ मैं। तो वो आरएफएस में तो हर कोई कर देगा, रियल लाइफ में तू करके बता, ये ले जॉयस्टिक बैठ और करके बता वाटर लैंडिंग मेरे को। जान दो भाई, फालतू अपन पंगे नहीं लेते। भाई साहब वैली के अंदर अंदर से क्या निकाल रहा हूँ मैं, आगे देख के चलाते, पता चला अपना ही प्लेन इधर क्रैश हो गया। 2-2.5 घंटे की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। अरे रेहान भाई क्या हाल चाल, वेलकम वेलकम सर, वेलकम टू द लाइव स्ट्रीम। रुको सर मैं थोड़ा आगे देख के चला रहा हूँ, आज मेरे को फ्लाइट को क्रैश नहीं करना, 2.5 घंटे की मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इट्स बिन अ लॉन्ग डे विदाउट माई फ्रेंड, यस सर, एंड आई विल टेल यू ऑल अबाउट इट व्हेन आई सी यू अगेन, वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम वेयर यू बिगन। अरे रेहान भाई बस क्या सर, एक एक वीकेंड मैंने लाइव स्ट्रीम नहीं करती, आप ये गाना गाने लग गए। वह क्या हाल चाल रेहान भाई, क्या हाल चाल, क्या चल रहा है भाई। कुणाल भाई एक एक बैरल रोल हो जाए 1000 फीट पे, नहीं भाई नहीं, बैरल रोल नहीं कर रहा मैं, वो इस पे करूँगा, मैं F-18 पे करूँगा भाई, ATR पे नहीं कर रहा मैं। ATR पे बैरल रोल हो ना हो, मैं रोल ज़रूर हो जाऊँगा। पिछला वीकेंड पूरा फ्री था, आपने फ़्लाइट ही नहीं किया यार। अरे भाई बोला तो सही रियान भाई कि अभी मैं इंडिया आने वाला हूँ, तो इंडिया आना हो गया ना मेरा भाई, तो इंडिया आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चलने लग गया, तो उस वजह से तो फिर मेरा लाइव स्ट्रीम का कुछ स्केड्यूल बन ही नहीं पा रहा था
कि मैं लाइव स्ट्रीम करूँ, क्योंकि क्या बोलते हैं मैं पूरा इसमें बिज़ी हो गया था। इधर आया, रिलेटिव्स को मिलो, ये करो वो करो, बहुत काम था मेरे को, तो मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं लाइव कर पाऊँ। अभी ये वीकेंड को भी आज भी मैंने मुश्किल से टाइम निकाला। मैं बोला नहीं भाई, दो वीकेंड हो जाएगा बिना लाइव स्ट्रीम के, आज तो एक करना ही पड़ेगा। Alright, 7 minutes out. Let's ask the cabin crew to prepare for landing. And okay, you don't have any ATC available, so that's fine. Fast FL, alright. Have a safe landing, Oliver. Have a safe landing. अब मैं नहीं फ्री रहूँगा रोल, तभी मैंने वो सॉन्ग अरे क्या बात है यार रेहान भाई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं यार। 6 महीने बाद जब फ्री हो जाओगे तब आ जाना यार, क्या दिक्कत है। लेकिन भाई ऑल द बेस्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए, एंड होप यू डू गुड एंड विश यू ऑल द सक्सेस भाई, विश यू ऑल द सक्सेस, होप यू डू गुड एंड स्टे सेफ भाई, स्टे सेफ, हैव फन, स्टे सेफ एंड विश यू ऑल द सक्सेस ब्रदर। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। चलो लैंडिंग लाइट्स ऑन, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड, फ्लैप्स फुल, ब्रेक्स टू 2, लेट्स टेक मैनुअल कंट्रोल। नहीं तो भाई ये सीधा माउंटेन में हमको घुसा देंगे अगर मैनुअल कंट्रोल नहीं दिया तो। ओके, नाउ वी आर इन बिटवीन द वैली, दिस इज कंफर्टेबल, लुक्स गुड, फ्लैप्स फुल, ब्रेक्स टू 2, स्पॉयलर्स इसमें होता नहीं है। लेट्स टर्न ऑन द हुड, एवरीथिंग एल्स इज लुकिंग गुड। वी हैव आस्क्ड द केबिन क्रू टू बी सीटेड फॉर लैंडिंग। ऑलराइट, परफेक्ट, ब्यूटीफुल। 6 मंथ्स तक लगा तो टाइम में कोई सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं, अच्छा आने का कि बट फॉर स्मॉल टाइम। अरे कोई बात नहीं रेहान भाई, आप जब आ पाओ तब आप आना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई आते जाते रहना। और ऑल द बेस्ट भाई, ऑल द बेस्ट आपको ऑस्ट्रेलिया के लिए। हैव अ सेफ ट्रिप और मज़े करके आना भाई, मज़े करके आना। That was a steep 10. Yeah. I know, Keshav bhai. Till the time I don't get a bank angle, it's safe. It's within the safe limit. But पता है मेरे को that was a steep 10, क्योंकि क्या बोलते हैं ना, if I didn't make that 10, I would end up in the mountains. तो इसलिए भाई मैंने वो स्टीप टर्न मार लिया,
मेरे को भाई माउंटेन के अंदर नहीं जाना था, मैं बोला स्टीप टर्न नहीं मारूंगा तो आई विल बी इन द माउंटेन्स। Alright, let's pull down on our gears, 3 nautical miles out. परफेक्ट आया भाई। कॉकपिट के अंदर तो एकदम लास्ट मोमेंट पे जाऊंगा मैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी रिस्की अप्रोच, तो कॉकपिट में तो एकदम लास्ट मिनट जाऊंगा मैं। ऑलराइट, परफेक्ट। थैंक यू भाई। भाई अभी आगे के मैसेजेस मैं बाद में पढ़ता हूँ भाई, एक बार लैंड करने का। ऑलराइट, लेट्स गो इन द कॉकपिट एंड लेट्स प्रिपेयर फॉर लैंडिंग। 1.5 nautical miles, let's turn off the autopilot. अरे वो चिच्चा इतना भी नहीं रे। अबे यार कौन है भाई ये, हट से। नमूने कहाँ कहाँ से आ जाते भाई, कहाँ कहाँ से आ जाते नहीं। गियर अप, लेट्स गो फ्लैप्स 15। Alright, let's go to FL. हाँ ना भाई, मोहित चोपड़ा लिटरली रुइंड इट भाई, क्या बताओ। अभी छोड़ो, जान दो भाई। एक तो ये बहुत डिफिकल्ट टेरेन है भाई, इसके आजू बाजू का माउंटेन टेरेन देखो यार। मेरी उठने में ही मेरे को डर लग रहा है, उसमें ही मेरे को डर लग रहा है भाई कि गया कहीं मैं ठोक ना दूँ, समझ लो। और ये बीच में वो चोपड़ा आ गया, मोहित चोपड़ा। टिपिकल हीथ्रो वाइब्स। अरे रियान भाई, टिपिकल हीथ्रो वाइब्स, बट दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट अप्रोच भाई। मेरे को ये अप्रोच में मेरी फट रही है, समझ रहे हो आप। द अप्रोच इज़ वेरी बैड। आई डिडंट वांट टू डू अ गो अराउंड, फ्रैंकली स्पीकिंग। कभी मिलूंगा या जब मैं कॉन्टेस्ट या जेट स्टार 787 का पायलट बन गया। अरे क्या बात है रियान भाई, होपफुली आप 787 के पायलट जल्दी बन जाओ भाई। गो फॉर मैनुअल अप्रोच, वही दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ। I am going to land from within the valley itself. I like the approach, hand flying through the valley. Yeah, that's what I am going to do. That's what I am going to do, Oliver, now. I am going to hand fly through the valley on the approach. Yep. अरे कर देते ना, ATR का ब्रेक सिस्टम अच्छा है। अब आई डोंट नो इन गेम भाई, इन गेम भी ATR का ब्रेक सिस्टम अच्छा है। द ब्रेकिंग सिस्टम इज़ गुड फॉर ATR इन गेम ऑल्सो, बट भाई वो
क्या बोलते हैं, टच डाउन जोन के बाद लैंड करता था मैं उसमें 110% में टच डाउन जोन के बाद लैंड करता था। Alright, let's go back. Let's go flaps to 30. सॉरी, मैं अभी थोड़ा सा चैट नहीं पढ़ रहा हूँ। एक बार ये टर्न मार लेता हूँ और लैंड कर लेता हूँ, उसके बाद आगे का चैट पढ़ा जाएगा भाई। Alright, perfect. Let's go gear down. Okay, sorry. रुक जाओ भाई, रुक जाओ। वो फॉर मैनुअल अप्रोच कर देते। ATR का ब्रेकिंग अच्छा है। ये दिन नहीं कर सकते इसमें। नहीं भाई रियान भाई, इसमें अभी दिन नहीं कर सकते। मल्टीप्लेयर पे खेल रहा हूँ तो मैं इसको दिन नहीं कर सकते। ये रियल लाइफ वेदर और रियल लाइफ टाइम पे ही चलता ही है। एज पर प्रोटोकॉल दैट चोपड़ा रूइंड इट। गुड डिसीजन बाय कुणाल टू गो अराउंड। अरे थैंक यू केशव भाई, थैंक यू। आई थिंक बिकॉज ऑफ द रनवे लेंथ you should set the brakes to more than 2, is it? Okay, let's go for brakes to 3 then. Gear down, brakes 3, gear down, flaps full. Everything else is looking good. Yep, let's get rid of the waypoint hood now. I really love go arounds on Kunal's stream. He really gets अरे यार केशव है बस क्या। एक्चुअली इट एनॉयज मी, क्योंकि भाई उसके बाद में जितना क्या बोलते हैं ना, उसको लाइन अप करो वापस, वो फिर से उसको क्या बोलते हैं रनवे के साथ अप्रोच के साथ लाइन अप करो, पूरा मेहनत फिर से करो। क्या पता वो अब सेकंड टाइम अच्छा लैंडिंग होगा नहीं होगा, कितना अच्छा लैंडिंग होगा कितना बुरा लैंडिंग होगा, कुछ समझ में नहीं आता ना। तो इसलिए मेरे को ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आता है। आज मेरा फाइनल फ्लाइट होगा फॉर लुफ्तांजा। रहे हैं क्या बात है सर। गुड बाय टू लुफ्तांजा ना रियान भाई, पर कोई बात नहीं, गुड बाय फॉर समथिंग बेटर, है कि नहीं। जैसे मैं US को गुड बाय बोल के आया, आप लुफ्तांजा को गुड बाय बोल रहे हो। Okay, alright, beautiful. Let's go inside the cockpit now. Nice one. Nice and steady on the approach. Flaps full, gears down, brakes to 3. Nice, perfect.
अरे अभी कोई बीच में आया ना भाई, मैं नहीं कर रहा गो अराउंड, अब होगा सीधा लैंड, नो मोर गो अराउंड। अरे यार फ्लोट नहीं करना था साले, फ्लोट नहीं करना था, हक दिया, पटक दिया भाई इसको। शे, इसीलिए मेरे को गो अराउंड पसंद नहीं है भाई, इसीलिए मेरे को गो अराउंड पसंद नहीं है। और ये टेल स्ट्राइक भी है गारंटी। हाँ चलो कोई नहीं, ठीक है, अभी जो है वो है। अगर जेट स्टार का पायलट बन गया तो क्वींसटाउन का राउट भी करना पड़ेगा बिफोर आई जॉइन सर। अरे यार बहुत बहुत खूबसूरत राउट था ये वाला रेहान भाई, राउट तो बहुत खूबसूरत था। शे, फ्लोट मार दिया यार, बहुत ज़्यादा फ्लोट मार दिया। ऑलराइट, फ्लैप्स अप। हाँ, कोई ना कोई फ़ोन, अरे फ़ोन नंबर नहीं देगा वो तो अलग बात है यार रेहान भाई, लेकिन वो बढ़िया लैंडिंग होता था मेरा, जो पहली बार कर रहा था ना वो बहुत बढ़िया लैंडिंग होता था मेरा। ये वाला बहुत गंदा हुआ यार, बहुत गंदा हुआ ये वाला। टच डाउन जोन भी मिस हो गया भाई, टच डाउन जोन के बाहर लैंड किया मैंने, फ्लोट भी मार दिया, टच डाउन जोन के भी बाहर गया, और मज़ा नहीं आया भाई, मज़ा नहीं आया। बहुत बहुत वाहियात लैंडिंग था ये वाला। और टेल स्ट्राइक भी हुआ है, 110% ये टेल स्ट्राइक हुआ है। आइस ऑफ, टैक्सी लाइट्स ऑन, स्ट्रोब लाइट्स ऑफ। ओके, एवरीथिंग लुक्स गुड। चलो भाई लेट्स कंटिन्यू। लैंडिंग हार्ड हो गई लेकिन कोई बात नहीं, हाँ वो तो है ही भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। हो गया लैंडिंग, पहुंच गए नीचे, जो हुआ वो हुआ। लेकिन यार बहुत गंदा था ये वाला, मज़ा नहीं आया, बिल्कुल मज़ा नहीं आया। इसीलिए देखो केशव भाई, इसीलिए मैं रोता हूँ गो अराउंड के लिए। अब आप समझ रहे हो मैं क्यों रोता हूँ गो अराउंड के लिए, मेरे को क्यों नहीं पसंद है गो अराउंड। हाँ, थ्री टू वन, पार्किंग ब्रेक सेट। Let's turn on the cabin lights. Let's turn off the beacon lights. TCAS to standby. Seatbelt signs off. Waypoint hood off. Let's call in the ground power unit first, and let's turn off engine number 2. भाई लैपटॉप टू डू कैरी की स्ट्रीम जैसे वीडियो वायरल हो गई है, मतलब आई मीन ब्रेक कर दो, क्या क्या बोल रहे हो भाई। नहीं, अच्छा लैपटॉप ब्रेक कर दो, नहीं 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 भाई, इतना भी नहीं वायरल करना मेरे को, मेरा लाइव स्ट्रीम, इतना पैसा नहीं है भाई।
हेलो RFS aviator, how are you doing? How are you? कितना था? 448। अरे रे 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 पटक दिया भाई, बहुत गंदा पटक दिया इसको। छोड़ो भाई, चलो डीबोर्ड करो, ख़त्म करो। बहुत गंदा पटक दिया इसको। ये मैंने अपना वो वाला लैंडिंग रिपीट किया है केशव भाई। मेरे साथ जो इस्तांबुल की फ़्लाइट पे हुआ था ना, वही मैंने यहाँ पे रिपीट किया है। चलो भाई अनलोड करो फटाफट। व्हाट्सअप? ऑल गुड ऑल गुड। हाउ आर यू RFS aviator? हाउ आर यू डूइंग? Bye bye Ryan, bye bye, see you soon. Hope to see you soon, and all the best for your new adventure with Qantas or Jetstar or whatever you join. But all the best, and I hope you have a great time there. I got -315 feet per minute. Nice, that's better than what I got. उतना भी बुरा नहीं था VS। हाँ यार, अभी ठीक है, क्या ही किया जा सकता है। चलो कोई बात नहीं। Deboarding is complete. I don't think so we have anyone else yet to land, right? Yep, everyone is on the ground. We have completed the deboarding process, so let's go ahead and disconnect. Oliver and Lewis, you guys can go ahead and disconnect if you would like. If you have completed your deboarding, you can go ahead and disconnect. I think we are good. I think we are good here. So deboarding is complete. Let's go ahead and disconnect, and let's take a look at the landing replay. So yeah, Oliver, once you're done with your deboarding, you can disconnect. I'm just going to disconnect and take a look at the landing replay now. राउट बताओ कैसा था? अगर फिल्म, अरे फोनिक भी, राउट तो बहुत बढ़िया था भाई। राउट का कोई दिक्कत ही नहीं है, राउट बहुत तगड़ा था, बहुत बढ़िया राउट था, कोई दिक्कत ही नहीं था भाई। ये राउट का बहुत मज़ा आया, ये वाले राउट पे 110% भाई। Alright, let's take a look at the replay. Let's take a look at the takeoff. चलो देखते हैं टेक ऑफ पे टेल स्ट्राइक हुआ था कि नहीं हुआ था। Alright, let's enjoy the takeoff and then let's take a look at the landing replay. एकदम हल्का सा था, देयर वाज सम टेल स्ट्राइक ना, पता नहीं। चलो नाइस, ब्यूटीफुल डिपार्चर। नाउ लेट्स टेक अ लुक एट द लैंडिंग रिप्ले। ये फ्लोट नहीं होना चाहिए था, ये फ्लोट नहीं होना चाहिए था भाई। नसीब नसीब नसीब। There was no tail strike on the landing, so that's good. There was no tail strike on the landing, that's good. But a very firm landing. Whew. Okay, alright guys, so with that let's call it a day.
Thank you everyone for tuning into the live stream today. It was a pleasure flying with you all. Until I will see you guys again next weekend on Saturday or Sunday, I will let you guys know in the community tab. And until then, stay safe, take care, bye bye. Thank you for tuning in, and it was a pleasure flying with all of you. So I'll see you guys again next weekend. Until then, stay safe, bye bye, and take care.